and a very good evening. I, Raisha Sehgal, on behalf of Zee Media Group, extend a very warm welcome to our guests and profound speakers to Zee Media India eMobility Conclave 2023, co-presenting Saro Electric and Servacon, powered by Begos, mobility partner Evazon and SKS Trading, logistics partner APML, knowledge partner GL Bajaj. Ladies and gentlemen, the conclave today aims to bring together key stakeholders from various sectors to discuss and promote the adoption and integration of electric vehicles in the transportation ecosystem. While India today stands at the cusp of a groundbreaking revolution in electric mobility, and I have some numbers to share with you. In the first 7.5 months of this year, India saw sales of over 900,000 EVs. In the month of August itself, a total of 62,000 EVs were registered. And these numbers reflect the growing acceptance of technology among the consumers in India. Ladies and gentlemen, the conclave today will serve as a platform to exchange knowledge, ideas, and experiences in the area of electric vehicles. It will also bring together thinkers, policy makers, industry professionals, and enthusiasts. On that note, we would now be unfolding Zee Media India eMobility Conclave 2023. It's my pleasure to introduce our chief guest for today's conclave, Shri Nitin Gadkari, Union Minister of Road Transport and Highways of India. Can we have a round of applause for Shri Gadkari? Well, Shri Gadkari has played a major and a pivotal role in India's e-mobility and has taken some concrete steps in India's Go Electric campaign, spreading awareness on the benefits of e-mobility. I would request Shri Gadkari ji to please come up on the stage for the lamp lighting ceremony. I would also request Mr. Abhay Ojha, CEO, Zee Media Corporation Limited, and Mr. Rajneesh Ahuja, editor, Zee News and ZeeNews.com, to please come up on the stage. I would also like to call on stage Mr. Vijay Kapoor, founder, Saro Electric, and Mr. Anupam Batra, MD Arzu, to please come up on the stage and light the lamp as we commence today's conclave. I would request Mr. Pranay Upadhyay, anchor Zee News, to come up on the stage and hold a brief discussion with our chief guest. तो इस हॉल में आज जितने भी लोग मौजूद हैं, उनमें से अधिकतर वो लोग हैं जिन्होंने अपने बचपन में टीवी का क्रेज देखा, लेकिन हमारे साथ आज जो मौजूद हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने देश में ईवी का क्रेज बढ़ाया. तो सर, ऐसा नेता आमतौर पर हम लोगों को टीवी वाले कहते हैं, तो आपके बारे में कहा जाता है कि पिछले कई समय से आपने बिल्कुल एक प्रण ले रखा है कि आप फॉसिल फ्यूल की गाड़ी में नहीं चल रहे हैं, आप अभी भी हाइड्रोजन व्हीकल से आए हैं. ये सही है? देखिए, अभी तो मैं Z+ में हूँ, तो मुझे बुलेट प्रूफ गाड़ी के लिए मैंडेटरी है, पर मैं अभी आज हाइड्रोजन कार में आया और जनरली इलेक्ट्रिक व्हीकल ही यूज़ करता हूँ. और मैंने ये तय किया कि मैं अब पेट्रोल डीजल के गाड़ी में नहीं बैठूँगा. इसके जो 4 महत्वपूर्ण कारण हैं. पहला कारण ये है कि हमारे देश में इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, पोल्यूशन, ये हमारी बहुत गंभीर समस्या है. और दिल्ली के लोगों को ये बताने की इसलिए आवश्यकता नहीं है कि पोल्यूशन के कारण दिल्ली में आम लोगों की सेहत पर बहुत बुरा परिणाम हो रहा है. 40% ऑफ द एयर पोल्यूशन इज़ बिकॉज ऑफ फॉसिल फ्यूल. दूसरी बात, हमारे देश में जो फॉसिल फ्यूल है वो 16 लाख करोड़ का इंपोर्ट है. अगर आत्मनिर्भर भारत बनाना है, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है, जो प्रधानमंत्री जी का सपना है, वो अगर पूरा करना होगा तो हमें इंपोर्ट को कम करना होगा, एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा. और ये जो इंपोर्ट है, ये इकोनॉमिक चैलेंज तो है ही, पर पोल्यूशन का भी चैलेंज है. और इसलिए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनस. तीसरा, मैं किसान हूँ और 2004 से मैं कह रहा हूँ कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर. आपने पार्लियामेंट में पिछले साल कहा था कि 2 से 3 साल का वक्त मुझे दीजिए और आप देखिएगा कि ईवी का जो कॉस्ट है
और पेट्रोल डीजल की कार के कॉस्ट के बिल्कुल बराबर आ जाएगा। तो अब हम 1 साल पूरा कर चुके हैं 2 साल में से, तो कितनी जल्दी होगा ये? देखिए, आपको जब मैंने बोला था तब लिथियम आयन बैटरी की कीमत $150 पर किलोवाट पर आवर थी। आज वो $115 पे आई है। और मैं आपको बताता हूँ कि 1-1.5 साल में ये $100 पे आएगी। और जिस दिन $100 पर आएगी उस दिन इलेक्ट्रिक और पेट्रोल और डीजल व्हीकल की प्राइस सेम होगी। अब दूसरी बात, आपके पास शायद पेट्रोल की गाड़ी होगी, आप 30,000 रुपये आप पेट्रोल की गाड़ी के लिए पेट्रोल पे खर्चा करते हो, ऊपर से पोल्यूशन होता है। और आपको अभी इलेक्ट्रिक गाड़ी यूज़ करिए, आपका 30,000 का खर्चा 2-2,500 रुपये पे आएगा। और अभी तो हाइड्रोजन भी आगे बनेगा, तो मुझे लगता है कि आपका कॉस्ट जो है वो बचेगा और प्रदूषण कम होगा। तो निश्चित रूप से अब मुझे सब इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बसेस, इसकी वेटिंग लिस्ट है। कल वो टाटा कंपनी के परसों एमडी मेरे पास आए थे, मुझे बड़े कह रहे थे कि हमने ये फोर्ड को लिया है, ये किया, अब 6 लाख की, मतलब 6 लाख नहीं 60 लाख की कैपेसिटी करो। आज सब इलेक्ट्रिक गाड़ियों में जिन जिन लोगों ने इलेक्ट्रिक गाड़ी को कन्वर्ट किया उनका मार्केट शेयर बढ़ा। लेकिन आप बहुत दिनों से ये कोशिश कर रहे हैं कि आप स्टेट्स के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से मिल रहे हैं, उनको भी आप समझा रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए जो इलेक्ट्रिक बसेज हैं उनका एडॉप्शन किया जाए, क्यों नहीं आपकी बात मानी जा रही? सर वो अब सच बताना मेरे लिए कठिन है। वो स्टेट गवर्नमेंट के जो बसेस है ना, उसमें हॉर्न छोड़कर सब बजता है। मैं एक बार मेरे ज़िले में एक पेट्रोल पंप पे मेरे गाड़ी में, सरकारी गाड़ी में पेट्रोल भर रहा था, टूर पर था, उतने में एक राज्य की बस आई, नाम नहीं लेता, तो बच्चे ने जैसे बस देखे, हे चल आगे जा। मैंने बोला अरे तेरे पास है ये डीजल है, तू ऐसा क्यों कर रहा है? बोले साहब ये पैसे ही नहीं देते, बोले ये। तो ये जो स्टेट ट्रांसपोर्ट है, इनका प्रॉब्लम है कि वो आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। अब मैं एक मॉडल तैयार कर रहा हूँ कि एक डीजल की बस जब चलती है बेस्ट की मुंबई में, तो 115 रुपये किलोमीटर पड़ता है। और अभी जब हमने टेंडर निकाला भारत सरकार ने, तो नॉन एसी बस का 39 रुपीज़ पर किलोमीटर और एसी का 41 रुपीज़ पर किलोमीटर आया। और अभी सब्सिडी थी, अब सब्सिडी नहीं है तो मैक्सिमम 60 रुपीज़ आएगा, तो आधा पैसा बचेगा। और उससे भी अच्छा है कि मैं अब दिल्ली से जयपुर इलेक्ट्रिक हाईवे बना रहा हूँ केबल का, और वो हाईवे पे 2 बसें जोड़कर 3 बसें जोड़कर लग्जरी बस होगी, एयर कंडीशन होगी, बिजनेस क्लास जैसी सीट होगी। कोशिश कर रहा हूँ कि चाय कॉफ़ी भी मिल सकेगा। और 1.25-2 घंटे में जयपुर जाएंगे पूरे हाईवे से लगकर। ये UR2 वो पानीपत के बाद जो रोड हमारा शुरू होता है ना, पेरीफेरल रोड के पास, वहीं से शुरू होगी डायरेक्ट जयपुर। और ये टिकट रेट डीजल बस की तुलना में 30% कम होगा, तो नेचुरली लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रीफर करेंगे। तो ये इलेक्ट्रिक से हो सकता है। इलेक्ट्रिक पर जहाज़ चल सकते हैं, इलेक्ट्रिक पर स्कूटर चल सकती है, कार चल सकती है, बसेस चल सकती है। अब इलेक्ट्रिक का ट्रैक्टर भी तैयार हुआ है, मान्यता के लिए रुका हुआ है। आपने 18,000 करोड़ रुपए की PLI स्कीम लॉन्च की थी सस्ती बैटरीज के लिए, उस पर क्या अपडेट है? और सस्ती बैटरी के अंदर क्या विकल्प हैं जो आपको लगता है कि नियर फ्यूचर में आ सकते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो बहुत तेजी से चेंज हो रही है? देखिए, इसमें 2 प्रकार की बात है। हमारे जम्मू के पास हमको लिथियम आयन मिला है, और वर्ल्ड का 6% लिथियम है वो। और अभी हमारे देश में ये फ्यूचर है, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट और फ्यूचरिस्टिक विजन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अभी वो जो है उनको 3 साल वो लिथियम निकालने के लिए लगेगा। हम 1200 टन लिथियम आयन इंपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं अभी आज ही गाड़ी में आते समय मैं माइनिंग सेक्रेटरी से बात करने वाला हूँ कि ये 3 साल के पीरियड को 1-1.5 साल नहीं ला सकते। और हम लोग प्राइवेट सेक्टर की मदद करके पर टन उनको ये देंगे रेम्यूनरेशन, और उसके आधार पर अगर ये लिथियम आयन अगर हमारे देश में उपलब्ध हुआ तो वर्ल्ड में सबसे कॉम्पिटिटिव हमारा ई-व्हीकल, ई-ट्रक, ई-बस, ई-कार बनेगी। और वो बनेगी तो हमें स्काई इज़ द लिमिट है, और अभी वेटिंग लिस्ट है। और दूसरी बात जो आपको, तो जब नंबर बढ़ता है तो कॉस्ट कम होती है। अभी क्या हुआ है कि प्रोडक्शन कम है, डिमांड ज़्यादा है, और इसलिए लिथियम आयन बैटरी में कमी होने के बाद भी मैन्युफैक्चरर कॉस्ट कम नहीं करते। जब मैन्युफैक्चरर बढ़ेंगे, प्रोडक्शन बढ़ेगा, और प्रोडक्शन सरप्लस होगा, एक्स्ट्रा होगा, तो कॉस्ट कम होगा।
Ladies and gentlemen, our first panel discussion will delve into this very topic, transforming urban mobility in India. And to discuss this, I would like to call on stage our esteemed set of panelists and moderator on the stage. Can we have a round of applause for Mr. Manav Sethi, Head of Martech and Growth, Hero Vida Electric Scooter Hero Motorcorp. We would also like to welcome Mr. Rahul Maggo, founder of Evazon. He's the visionary founder and driving force behind Evazon. A round of applause for Mr. Maggo, ladies and gentlemen. We also have with us Hemant Kabra, founder and MD, Bigos. As we all know that in the recent years, the urban mobility transformation has seen rapid change thanks to these e-scooters that have changed the dimensions of urban mobility. And that's what we want to discuss here today. We want to get into the nitty-gritty of it. What have been the challenges and what's going to be the roadmap. We have an amazing lineup of guests here, starting with Suhas. I want to ask you a very simple question. What got you into this particular space? First of all, thank you for inviting. It was a pleasure meeting at our launch. Answering your question, what got me into e-mobility? I come from a very humble background, just like every middle class out there wants to buy an EV, which is good, which is fast, which is an alternative to an Activa or any other IC counterpart there. So my father just raised a question on a dinner table asking me, where is India's EV story going? Because I don't see a reliable product out there to buy. And I was a bit shocked with the fact that he was not really happy with that. And that triggered a question in my head that, can we do something about it? And that's how the story began of Simple Energy. I want to ask Mr. Hemant, what are the factors that have actually contributed in the rise of the e-scooter market specifically? So I think there are various points which has actually added. If you see EV is there since quite some time, 2008, 2007. But if you see last 3-4 years or 5 years, that has completely moved up. I think the first key reason is the FAME. I think the FAME subsidy by the government is very, very taken up this industry to different level. Having this subsidy on per scooter has made the OEMs to make a good product, which is the right product for the consumer, and this subsidy has helped us to do that. Second, I think biggest reason is the GST. I think GST of 5%. Usually, if any government gives GST of 5%, that means they are very, very focused and looking forward to that particular industry to grow. So this is one of the second reasons why this has come up. And third, now the products are getting much more mature. Previously, maybe, and it's for any industry, whenever you start growing or building up, but now we see a much more mature product coming to the market. So consumers are also accepting it. Consumers are having a good experience to use a EV two-wheeler or EV any product. So when the consumer are satisfied, they will automatically shift to it. I think these are three major reasons why I think the EV has come up in the last 3-4 years. Mr. Maggo, I want to understand from you, how do e-scooters and e-bikes address the challenges that we get to face every day, especially in the urban cities, the traffic congestion that we get to face here, and of course, pollution is a factor, needless to say. So how e-scooters and e-bikes are solving this issue? As e-scooter and e-bike is it is very convenient to drive, and all the delivery partners are right now the business they are doing it from the cycle or from the fuel, like from the bike, fuel bike. Now they are focusing. Zomato is also focusing on shifting to its delivery partner towards electric scooters and electric bike, and the biggest factor is pollution. आपने एक नया स्कूटर, हाई परफॉर्मेंस स्कूटर को लॉन्च किया था, सिंपल वन उसका नाम रखा था. एक चैलेंज होता है एक स्कूटर को लॉन्च करना, लेकिन उसके बाद जो एंड कंज्यूमर है वो जो चैलेंजेस फेस करता है इन टर्म्स ऑफ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, रेंज एंग्जाइटी, उसको एड्रेस करने के लिए आपके क्या प्लान्स हैं और ये पूरा सेक्टर इन टोटल कैसे इन चैलेंजेस को एड्रेस कर रहा है?
पहली बात तो अगर आप रेंज एंजाइटी और चार्जिंग इंफ्रा, ये दो अलग मुद्दे हैं, ठीक है। रेंज एंजाइटी बहुत सारी चीज़ों में है, जहाँ पे आप देखें कि अगर किसी को एक स्कूटर खरीदना है, 30 किलोमीटर का भी डिस्टेंस ट्रैवल करना है, और वो कह रहा है कि मेरा अप एंड डाउन 60 किलोमीटर्स है, तो बहुत सारे स्कूटर्स बिफोर क्वालिटी प्रोडक्ट्स केम इन, वो 40 किलोमीटर भी नहीं कर पाते थे, राइट। उसके वजह से वो रेंज एंजाइटी बढ़ गई है। बट इनफैक्ट if you look at a good scooter, that itself gives you roughly about 50 kilometers of range. So I don't think range anxiety is a big problem today. Charging infrastructure एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उसमें प्रोडक्ट कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। अभी फॉर एग्जांपल सिंपल वन, हम परफॉर्मेंस और रिमूवल बैटरी पैक नहीं दे पाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये दो अलग मुद्दे हैं। अगर आप जब परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं तो आप रेंज की बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमने वो कोशिश करी है, जहाँ तक हो सकता है कि सिंपल वन की बात आए तो हमने कोशिश करी कि दोनों चीज़ें करें। लेकिन आई थिंक सबको साथ आना पड़ेगा एक रिमूवल बैटरी पैक टेक्नोलॉजी, जहाँ पे आप एक छोटी बैटरी पैक, जहाँ पे आप चाहे 1.5 या 2 किलोवाट के आसपास की बैटरी पैक्स लगाएं और उसको रिमूवेबल वे में दें, और एक रियलिस्टिक 50 to 60 किलोमीटर का रेंज दें, ताकि आप उस बैटरी पैक को घर लेके जाएं, कहीं पे भी चार्ज कर सकें। तब तक जब तक गवर्नमेंट या फिर हम प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर सब मिलके एक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने के लिए एटलीस्ट आई थिंक अराउंड 5 to 6 years और लगेंगे टू हैव अ वेरी प्रोमिनेंट वन, एंड विद दैट वी नीड टू ऑल्सो अग्री ऑन अ सर्टेन चार्जिंग प्रोटोकॉल, right? We cannot have different protocols for different companies, which is a big problem, which we have also put forth, right? So I think combination of charging ports or charging protocols with an adoption of a lower variants of a removable battery pack can solve a lot of things. And when we solve this part of the problems, I think range anxiety is nothing but just a hype that is going on. Hemant, when we're talking about high-performance scooters and even the normal scooters, one thing that is there in everyone's mind is about the safety and road safety factors. How can we, address these issues? क्या कोई एक हम कुछ campaign के through इसको हम improve कर सकते हैं, social awareness create कर सकते हैं? एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है कि जो स्टैंडर्ड्स अगर देखेंगे हमारे लास्ट 1-1.5 साल के अंदर, जो स्कूटर्स के या 4 व्हीलर के या 3 व्हीलर के स्टैंडर्ड्स जो बढ़ाए हैं, आई थिंक उसके कारण एक तो स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। जो पहले थे वो अलग है, अभी वो बहुत अलग है। दूसरा मेरा एक मानना है कि जितना जल्दी हो सके ये जो लो स्पीड व्हीकल जो हम पास करते हैं, एक 25 के स्पीड वाले का, इसके ऊपर बहुत जल्दी सोल्यूशन लाना ज़रूरी है। अगर ये जब तक नहीं आएगी, ये पूरी इंडस्ट्री को साथ में लेके चलते। सब लोग क्या देखते हैं, ये ईवी है, राइट, बट आप देखिए ये हाई स्पीड ईवी में स्टैंडर्ड्स बहुत अलग है, लो स्पीड ईवी के स्टैंडर्ड्स बहुत अलग है। और जब वो एक लो स्पीड में कुछ होता है तो हाई स्पीड को भी उतना ही इम्पैक्ट होता है जितना वो लो स्पीड में होता है। दैट इज़ माई पॉइंट कि अगर हम ओवरऑल स्टैंडर्डाइजेशन करना जरूरी है। एंड थर्ड पॉइंट इज एजुकेशन, दैट हाउ टू यूज अ गुड बैटरी, how to charge, what are the basic hygienes to take care of it, should be very well educated and known to the people. Mr. Magoo, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स और स्कीम्स की अगर हम बात करें, कितना ज़्यादा ईजी हो जाता है कंपनीज को ईवी स्टार्टअप के अंदर आना, और कितना आपको इससे मदद मिली है गवर्नमेंट के इनिशिएटिव से? As it is providing subsidies to the manufacturer as well as the consumer, it is like very easy for the consumer to get the right product, and government is only subsidizing the product which is made in India. Like it is giving like more business to the India, and it is accelerating the like more production in India in EV, and it is giving benefit to the consumer as well as they are getting the subsidies. It is very good for like India. And the next panel discussion will gauge the road ahead for electric vehicles in India and will assess the potential of India in becoming a global hub for EV production. And to discuss this, I would like to call our esteemed set of panelists on the stage. Ladies and gentlemen, please welcome Jyoti Malhotra, MD Volvo Cars India. We also have with us Madhumita Agarwal, co-founder and CEO Obein Electric. Let's also welcome our last panelist of the session, Mr. Arun Malhotra. Mr. Malhotra is an auto industry expert and an IIM Calcutta alumni, and the session will be moderated by Dinesh Sharma, technology editor, Zee Media. Let me start with Mr. Jyoti, being the legacy brand which has been known to create amazing ICE engine cars, and now also starting
electric vehicle cars. How has been the journey and what are the consumer trends? So first of all, I think I'm sure many of you would know, globally Volvo announced a few years back that we are completely going to shift from IC engines to electric vehicles. And by 2030, we want to become a full electric car company. That was the start. I think this was announced like way back in 2017. I think we were the first global manufacturer to announce that. And we have lived up to that. And there is a full lineup coming up. And in India, as you said, we have already launched XC40 Recharge. And we have got, I would say, amazing response. In the sense, if you see within our own portfolio, we are selling close to 27% of our total portfolio of sales is now coming from BEV, which is only with one car line. And if you look at our own share within the luxury EV segment, we are, I think, close to 25% again with one car line. So I think it is very, very encouraging. Madhumita, you are the founder and CEO of Open Elect. First of all, what was the reason that convinced you, okay, I want to start an EV company and also I want to get into e-bikes, not in any other space? I come from R&D background, so prior to this, how I got introduced to EV, it was not just a dream or something. Previous to this, the R&D company, which I'm also a founder of that company, where for 6 years I was doing R&D in that space, working for different other companies. And that is where I got introduced to EV and the entire EV landscape. Looking at the future, what it brings, and that's the next, right? EV is real. Now coming to why didn't I choose bike, right? The whole world was moving towards scooter. But if you look at India, India is the world's largest motorcycle market. But motorcycles are very, very complex to build. You know how in India EV picked up? It picked up from the B2B segment, which is like scooters, more, easily available, or, we have access to it. But to build a motorcycle, there is a lot of R&D needed. I don't say that scooter doesn't need, but it takes time to adopt. And there is a kind of in the consumer's mind that will it be a ICE comparable motorcycle? That's the first question to be answered. And as an OEM, that's the even a great responsibility we have, that can we make a ICE comparable product? So I think that's my journey, how it started into the EV and why I decided that I should get into motorcycle, because that's the space, India is still has to grow. Mr. Arun Malhotra, do you really think that EV industry is as exciting as ICE or maybe better? And what are the factors that are actually pushing and making the customer also excited about this particular space? Well, I think that the previous panel was mentioned in terms of emissions, in terms of technology, in terms of ease of driving, in terms of future technologies being incorporated. So that's pushing clearly in this area. But I think one of the challenges in EV is, every segment of EV has its own dynamics. A two-wheeler EV has a different dynamics. A three-wheeler has a different dynamics. A passenger vehicle has different dynamics. Heavy commercial vehicle has different. And within two-wheelers, as I mentioned, even the scooters and motorcycles have different dynamics. So I think that a better understanding of the dynamics is important. But I think I would like to play the devil's advocate. And it's an exciting journey. It started. I've been part of the two-wheeler industry for first 15 years of my career, so I can see clearly the veins of change are coming. But then the question is it being accelerated at pace? Some are finding the last 6 months, and somewhat it's becoming more constant. It needs to leapfrog. And I believe there are 5 R's which we need to answer very strongly and clearly, over and above everything. And I think there's progress on these R's. Right price. When I say right price, it also means the price of financing, because financing is not all that easily available, whether in terms of its down payment or whether it's, so that is the right price. Then is range mentioned. Range in terms of how much it can drive. Then reach in terms of network for EV charging. Then reliability. Reliability is something which has to be ingrained that it is more reliable. And then is there peace of mind or reassurance which comes from resale value. So each of these R's has to be focused on, over and above the technology. अब ये इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडिया में इसका एक रेगुलेशन स्टार्ट हो गया है. वो आज से 5 साल पहले था, वो सोचता था लूँ नहीं लूँ, चलेगा नहीं चलेगा. Either it is failure or success. Now it is proven
and it is a successful product, and also government supported and legalized this product. And there is no doubt about this product and this efficiency also. And this is also low cost and pollution free product for the country. तो ई मोबिलिटी और ई व्हीकल्स का भविष्य बहुत उज्जवल है, मेरे ख्याल से ब्राइट है। ऑल्दो अभी शुरुआत है और काफ़ी हमें रास्ता तय करना है, पर सब क्षेत्रों में, चाहे टू व्हीलर्स में हो चाहे फोर व्हीलर्स में हो, अब काफ़ी कंपनियों की रुचि है, वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं, सरकार का सपोर्ट भी है। तो टाइम लगेगा और हम किस तरह से हम इसमें गति, इंडस्ट्री, एकेडमिया, गवर्नमेंट किस तरह मिलकर काम करती है उस पर बड़ा डिपेंड करेगा कि स्पीड पे हम करते हैं, पर भविष्य उज्ज्वल है। देखिए, जी ने जो इनिशिएटिव लिया है बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया, और इस तरह के इनिशिएटिव रेगुलर लेते रहना चाहिए टाइम टू टाइम। हमारा मेन मोटिव है इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करना, और जो देश में पोल्यूशन है, बढ़ता पोल्यूशन है, इसको ख़त्म करना। और सबसे बड़ी चीज़ जो हमारी डिपेंडेंसी है, जिसके ऊपर कोई नहीं बोलता है, जो हम गल्फ कंट्री से, अरब कंट्री से कब तक हम पेट्रोल और डीजल की भीख मांगते रहेंगे, उनसे खरीदते रहेंगे, वो डिपेंडेंसी हमारी ख़त्म होनी चाहिए। EV vehicle has a great future here in India, because as we are facing problem in like pollution and in for the traffic, as government is taking initiative towards the public transport getting into EV, and it will like be a huge contribution in the market or Indian market for the pollution and for the better health of the people living here in India.